ये दो ज्योति कौन है? तो ना ये बताओ एनसीईआरटी का थोड़ा क्लास कर रही है क्या? So we were writing about that, talking about the types of ER, right? So mainly on the basis of the presence or the absence of that ribosome, there are mainly two types of ER, that is a rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. Because of the presence of ribosomes, it is rough. Of course, the structure is not smooth. So that is why it is called rough endoplasmic reticulum. And the second name is that because it appears like the granules. Okay? So it appears like the granules like this. So it is also known as a granular endoplasmic reticulum. And the second one, because of the absence of that ribosome, so that is called that smooth endoplasmic reticulum slash a granular endoplasmic reticulum. So we'll write about that. Okay. So write down first McDadding. Ma'am. Yes, Shali. Sorry to interrupt, but ma'am, the biodiversity note has not been uploaded in the site. The note you used to taught us in the class. Biodiversity or biome? Biodiversity hotspot you are talking about? Yes. Okay, it has not been uploaded. What? No, ma'am. Okay, I'll see that, है ना? और आज शाम तक up till like 5:10 पे हमारी class finish होगी. So today 6 o'clock तक, maybe 6:30 तक I'll upload that. Okay? तो वो जो book है उसमें biodiversity hotspot नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. नहीं है, ma'am. Okay, so I'll upload that. Don't worry. Okay? Sure. Right on. First, granular or rough endoplasmic reticulum. First, granular or rough endoplasmic reticulum. They possess rough walls. They possess rough walls because the spherical granular structure called ribosomes remain attached with its membranes on the surface. Therefore it is also
appeared rough, and called granular, granular ER. The binding site of ribosomes, on the RER, is called translocon. It is well developed in cells. In those cells, and found in almost all cells, almost all the cells which are actively engaged in the protein synthesis, such as liver cells, goblet cells, pancreatic cells, etc. Next point, the attachment of ribosomes, on the ER membrane surface, occur with the help of protein, called ribofourin, first and second. Next, the granular type of ER, takes basophilic stain due to its RNA content of ribosomes. Next big heading, SER. These type of ER possess smooth walls because the ribosomes are not attached with its membranes, on the surface. So the surface becomes smooth. Next, the SER is generally found in adipose cells. Interstitial cells, glucagon storing cells, and those cells which synthesizes steroid hormones. It means SER generally found in those cells
It means SER generally found in those cells which are almost inactive in protein synthesis, almost inactive in protein synthesis, but actively involved in lipid, इसमें लिखो, it is a system of tubules. It is a system of tubules. और रफ वाले में लिख लो, it is in the form of flattened sacs. Rough में just add one more line. It is in the form of flattened sacs. Flattened sacs. ठीक है? So now, abhi we are going to write about that function of SER, but still just write one thing: glycosomes. Make the heading छोटा सा, glycosomes. Although the SER forms a continuous system with RER, comma, have different morphology, such as in liver cells, it consists a tubular network. It consists in the form of tubular network. Full stop. And full stop. And prevates tubular network, comma, and prevates major portion of the cytoplasmic matrix, and prevates major portion of the cytoplasmic matrix. Full stop. These fine tubules, full stop. These fine tubules are present in regions rich in glycogen, and can be observed as dense particles called glycosomes in the matrix. Full stop. They measures around 50 to 200 nanometer in diameter. Nanometer in diameter, nm in diameter, and contain glycogen along with enzymes involved in the synthesis of glycogen. First, we are going to write about that functions of the ER, means in which we are going to write the common function, थोड़ा सा specific करके. Then specifically, because आपके IFS में properly the question has been asked, what is the differences between that ER, RER and SER. ऐसे तो we have just only two to three points की थी कि RER होता है उसमें, उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं, but actually अगर आपका difference 10 मार्क में पूछा गया, so you have to write at least 6 to 7 points. So what is the differences we can write on the basis of their function. ठीक है? So first write down function of ER. First write down common function of ER. First, common function of ER. First, mechanical support. The ER divides the fluid content
of the cytoplasm, the ER divides the fluid content of the cytoplasm into different compartments, and provides an ultrastructural skeletal framework to the cells to give mechanical support to the colloidal cytoplasmic matrix. Therefore, it is also called the cytoskeleton of the cell. Second function, transport. The exchange of molecules by the process of osmosis, diffusion, and active transport occurs through the membrane of ER full stop. ER इसी में लिखो. ER acts as a kind of circulatory system. ER acts as a kind of circulatory system involved in import, export, and intracellular circulation. Of various substances such as protein, lipids, enzymes, etc. इसी में थर्ड पॉइंट लिखो, लाइक ट्रांसपोर्ट में, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the ER membrane also has permeases and carriers. The ER membrane also has permeases and carriers. Third, protein synthesis. Ribosomes are protein factories. Which are attached to ER. And become more efficient than the free ribosome lying in the cytoplasm. The synthesized proteins by the ribosomes are collected by ER which are processed and transported to other organelle of the cell for various modifications
for various modifications such as Golgi, and further cell organelle, Make this diagram. So when we talk about ये क्या है आपका, what it can be, शिवम, ये क्या होगा आपका, ये mRNA होगा ना. हाँ, तो mRNA पे आपका क्या हो रहा है, राइबोसोम से ये प्रोसेस. तो वी नो दैट, हमें समझ में आना चाहिए ना, ये प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही है, नॉर्मल साइटोप्लाज्म में आपकी हो रही है ना. ये आपका mRNA उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है अमीनो एसिड, ये तो आपका प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो एक्चुअली राइबोसोम्स कैसे हम लोग बोलते हैं दैट RER इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज ये है आपका RER. RER के जस्ट ऊपर हम क्या देख रहे हैं, राइबोसोम्स आर अलाइन्ड. RER के जस्ट ऊपर व्हाट वी आर सीइंग, दिस राइबोसोम्स आर अलाइन्ड. ठीक है, as this ribosomes are emerging, so it is collecting in your tubules or the cisternae of that ribosome, और यहाँ से फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जा रही है, आपके ER में. ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोटीन कैरियर जो भी, मतलब we know that ना स्ट्रक्चर, अभी we will see that structure, but if we trying to see that structure, this is your nucleus, और यहाँ पे आपका क्या है, यही तो आपके ER है, और यहीं पे आपके क्या है, राइबोसोम्स अटैच है ना, यहीं पे आपके राइबोसोम. और राइबोसोम्स के जस्ट ER के अटैचमेंट के जस्ट बाद यहाँ पे हमने क्या देखा था, गोल्जी बॉडी. सो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जा रही है. ठीक है, सो अगर राइबोसोम, अगर ER ही आपके ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करेगा, तो प्रोटीन विल नॉट रीच टू द गोल्जी बॉडी. ठीक है, जस्ट मेक दिस डायग्राम. थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच. वेयर आर यू फ्रॉम, क्या जरूरत है जानने की, वेयर आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली. राम राम, चलो ठीक है, चलो ये डन. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स. सिंथेसिस ऑफ, ओके, synthesis of cholesterol and steroid hormone. Endoplasmic reticulum is a major site for the synthesis of cholesterol, that is a precursor for steroid hormone. Next, detoxification. Next, fifth point. It refers to the reduction of toxic properties. / chemicals, etc. from the cell. From Ram, Bharat, Ram, he said. It occurs in the detoxification process occurs in the ER of liver cells,
in the ER of liver cells in which it involves biochemical reactions by which harmful materials are converted into harmless suitable for excretion by the cell. Ram, actually no, we are actually in the paper second. आपकी first unit पे हम लोग cell organism, ठीक है? So cell organism में we have completed the basic what is cell, but everything concept of the cell. We have also talked about the basic structure of the plasma membrane, which is one of the very very important questions. ठीक है? So now we are talking about the single cell organism, which is important, right? So we have already completed your Golgi. We have already completed the ribosomes. So now we are almost at the end of the ER. Okay, we have completed the concept of the endoplasmic reticulum. Now we are writing the functions of the ER. Okay, as soon as ER will be going to finish, we will start with the lysosome. So as we are going to start with the lysosome, I am explaining this concept. So अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ना relate हो पा रहा हो, so just relax. Okay, lysosome से we will start करेंगे तो सारा कुछ relate हो पाएगा. ठीक है? So your background, but is the bio, no? So what's your educational qualification? अच्छा. Okay, so you have done the arts. Okay, no issue, fine. So, next write down. Glycogenolysis. Next function is a glycogenolysis. Shivam, just break this word. What is the meaning of this? Just break this word. No. Glycogen and lysis. Lysis मतलब ब्रेक डाउन किसी भी चीज की जब लोग हाइड्रोलिसिस किसी भी चीज के वर्ड के आगे जब लोग when we use the word lysis, that means simple the breakdown. अभी we have just covered the one concept, ठीक है, breakdown of the glycogen. Why? Because it is simple. Every kind of, जैसे कि suppose that if we are talking about that RER is involved in that protein synthesis. So in that translation process of the protein synthesis, there are so many energy required. Every single time energy is required. So जब आपका जैसे कि ER है ना, we have seen just this kind of arrangement. राम, ये वाला कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पर, है ना, ये हमने 12th में पढ़ा है, ठीक है. सो दैट इज द स्ट्रक्चर. तो राइबोसोम जब यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, सो यहाँ पे आपका बेसिक प्रोसेस हो रहा है ना शिवम. सो हियर द बेसिक प्रोसेस इज अकरिंग. For to continuous that basic process of course we are requiring the energy. अब every single time अगर ये energy कहीं बाहर से transport करेगा, so it will be not very much efficient. So इसीलिए energy आपकी कहाँ से मिल रही है? आपकी ER से. ER इसीलिए involved होता है आपका glycogenolysis में. और अभी हमने वैसे भी एक टर्म पढ़ा था ग्लाइकोसोम्स. क्या कॉन्सेप्ट था ग्लाइकोसोम्स का? जो कि आपके ग्लाइकोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड व्हिच आर डार्कली स्टेन्ड. ठीक है, तो ग्लाइकोसोम्स एक्चुअली पार्ट ऑफ योर ER. और ग्लाइकोसोम्स है और यहीं पे आपकी ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट है. यही ग्लाइकोजन आपकी एनर्जी भी दे रहे हैं. ठीक है, सो दैट विल बी द मोर एफिशिएंट. चलो, अगर आपको कंटिन्यूअस कोई प्रोसेस करना है, सो यू कैन नॉट गो कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन टू सम अदर, एंड आपको एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलनी चाहिए. सो ये आपका दिस इज द बेस्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन कि यही आपकी एनर्जी दे रहा है. एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द ER. ठीक है, राइट डाउन. Glycogenolysis, that is short पे लिख लो, the conversion of glucose slash breakdown of glycogen slash breakdown of glycogen. Glycogen क्या है आपका? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, और ग्लूकोज क्या है आपका? एक सिंगल यूनिट है. So the breakdown of glycogen into glucose which gives the energy. This process occurs inside the ER. As ER contain an enzyme
as ER contain an enzyme. So यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? So glycogen is your breaking down into the glucose. That means we are getting the energy. And what we have said that what is the energy currency in your body? ATP. That means every, or इसमें भी what we have said that phosphate is specifically your energy molecules, right? जब हम ATP को break करते हैं, when we break the ATP to get the energy, क्या टूटता है आपका? ADP plus PI, inositol phosphate या AMP जो भी है. That means what we are getting that phosphate एक आपका क्या है? Energy molecule है. ठीक है, समझ आ गया? अब इसी चीज को यहाँ से रिमूव कर दूं, so we get it. Phosphate आपका एनर्जी मॉलिक्यूल है. So आपका जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो एक्चुअली यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? ग्लूकोज है, तो दैट इज द सबस्ट्रेट, है ना? सबस्ट्रेट के साथ हम क्या लगा दें? 6 फॉस्फेटेज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. एंजाइम्स को रटना नहीं होता, राइट? ग्लूकोज में यहां से आपकी एनर्जी निकल रही है और वो एनर्जी कहां पर जा रही है? जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है, वो एनर्जी कहां पे आपकी अटैच हो रही है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो दैट इज व्हाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. ठीक है, बिकॉज ER contain an enzyme called glucose 6 phosphatase. Glucose 6 phosphatase. And finally it transport to the blood. And finally it transport to the blood. Last point लिखो common function में. The ER membranes are also found. The ER membrane are also found to conduct intracellular impulses such as SER, transmit impulse from the surface membranes into deep region of the muscle fibers. One more point. The ER membrane forms the new nuclear envelope. शिवम, कब बनेगा न्यू न्यूक्लियर एनवेलप? सेल डिवीजन के बाद. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द गोल्जी बॉडीज एंड ER. गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या था आपकी सेल डिवीजन में? क्या कर रहे थे गोल्जी बॉडीज आपकी सेल डिवीजन में? That is the cell division is divided into the two process. Cell division is that Forming the lamellar plates during the cytokinesis. It Yes, is forming the plates during the kinesis. yes, exactly. So after cytokinesis क्या हो रहा था Aishali? After cytokinesis, in the one cell there's a two nucleus. Formed from the. So what is the exact function of the Golgi bodies, Golgi apparatus into the cell division? Just answer me this. Ma'am, it is forming the plates, the cellular plates to divide the fissure for fissure. Yes, that is we call the cell furrow method or the cell plate method, है ना? शिवम, divide or yes, exactly. राम, आपके साथ कोई और भी शायद आने वाला था ना? चलो ठीक है. सेल डिवीजन पता है? एक सेल दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करती है. That is basically cell division. Suppose that ये आपका एक पेरेंट सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल. सपोज दैट हमारी स्किन पे चोट लग गई तो वहां की स्किन रप्चर हो गई, तो वहां की सेल क्या होगी? अब डिवाइड होगी. तो सेल हैज अ बेसिक थिंग. एक आपका न्यूक्लियस होता है और उसके बाद आपके सारे सेल मटेरियल होते हैं. तो न्यूक्लियस इज योर कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये याद है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये वाला प्रोसेस याद है? तो ये इसमें क्या हो रहा है? आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना? जब तक कि मास्टर डिवाइड नहीं होगा क्या करेंगे? सेल डिवाइड करके, है ना? सो जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है, इसके बाद की स्टेज पता है क्या होती है? इसके बाद की स्टेज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. दैट मींस न्यूक्लियस डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस.
ठीक है, दैट इज अ कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन। अभी जस्ट आफ्टर द टेलोफेज स्टेज क्या हो रही है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए, है ना। उसके बाद जो हम लोग गोल्जी बॉडीज उसमें पढ़ा था, गोल्जी बॉडीज यहाँ पे उसके पार्टिकल्स यहाँ पे आके ऐड होने लगते हैं। तो अब यहाँ पे इसके बाद जब ये वाला प्रोसेस बन रहा है, ये बन गई आपकी एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल, है ना। इसके बाद की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो गाइस साइटोकाइनेसिस में आपकी क्या हेल्प कर रही है, गोल्जी अपरेटिस। वाइल जब हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं एनाफेज में, एनाफेज की अभी हम लोग ने टॉपिक कवर नहीं किया है, ठीक है। तो एनाफेज में जैसे कि आपके यहाँ पे ऑपोजिट साइड में आपके क्रोमोसोम्स मूव कर गए, ठीक है। अब क्या हम लोग पढ़ते हैं एनाफेज की, जैसे हम लोग टेलोफेज, एज वी कम टू द टेलोफेज, दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। हम लोग पढ़ते हैं ना, सबसे पहले स्टेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और सबसे लास्ट स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है। सो दिस रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये भी आपकी मेम्ब्रेन ही है, वो आपकी किसके थ्रू बन रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ईआर। हम लोग जनरली कितने पे फिनिश हो जाते हैं, प्रोटीन बना रही है और लिपिड बना रही है बस, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, अगर यहाँ पे प्रॉपरली डिवीजन नहीं होगा न्यूक्लियस का, प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, so you know it may have the chances of that genetic abnormality। क्यों, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का एक इधर शिफ्ट हो गया तो, है ना। so that is why ER का this is one of the very important function। चलो write it down। the ER membrane forms the new nuclear envelopes after each nuclear division, after each nuclear division। Next, the sarcoplasmic reticulum. Next, the sarcoplasmic reticulum plays role in releasing calcium when the muscle is stimulated and actively transporting calcium back to the SR, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेक द हेडिंग द न्यू, अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट मेक द डायग्राम टू। ER का हमने एक भी डायग्राम नहीं बनाया ना, है ना शिवम, ओके। हाँ पेपर 1 हो गया है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द पेपर 2। तो अभी जैसे पेपर 2 हमारा कंप्लीट होगा, उसी के नेक्स्ट लाइक एक दिन के एक 1 डे विल गैप, क्योंकि जो बच्चों का भी मान लो पेपर 2 है, उनको कोई भी पेपर में डाउट है, तो विल टेक 1 डे गैप और द डिस्कशन क्लास, देन पेपर 1 अगेन स्टार्ट। तो इट्स अ यस, पेपर 1 आपका जून से स्टार्ट होगा। हाँ बट पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है, जैसे कि पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीटली अलग है। पेपर 1 में कंप्लीटली हम लोग नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कवर करते हैं, है ना, मत पूरा मतलब फिर आपका इकोलॉजी इथोलॉजी, तो इधर यू आर कंप्लीटिंग द पेपर 1 फर्स्ट और यू आर कंप्लीटिंग द पेपर 2 फर्स्ट, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। वो एक साथ में मतलब जून से स्टार्ट होगा तो वो दिसंबर तक ऑलमोस्ट खिंचेगा। अभी जैसे कि सपोज अगर आप कर रहे हो तो अभी वो आपका ये खत्म हो रहा है और पेपर 1 आपका जून से जब स्टार्ट होगा तो लाइक मिड ऑफ द जून से स्टार्ट होगा, क्योंकि 6 मंथ ऑलमोस्ट वी टेक टू कवर पेपर 1 टू पेपर 2 कंबाइन, ठीक है। दिस इज अ सिंपल ER, है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे गोल्जी में तो फिर भी हम लोग ने डायग्राम बनाया था, सिंपल एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाओ और उसके किनारे दैट व्हाट लाइक हाउ यू हैव टू ड्राइव ऐसे बना दो सिंपल, ठीक है। और इसमें आप क्या दिखा रहे हो, न्यूक्लियर पोर्स दिखा दो, दैट इज समथिंग यू आर शोइंग द न्यूक्लियर पोर्स, और उसके बाद सिंपल पैरेलल स्ट्रक्चर लाइक दिस विल बी मच मोर इजी टू ड्रॉ। कोई इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको PhD नहीं करनी है, ठीक है। और एक तरफ दिखा दो आपके बहुत सारे
राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद इट, उसको आप लोग शो कर दो, दैट इज RER, rough endoplasmic reticulum, because of the presence of the ribosomes and one side which is absent, that is called that SER. ठीक है, ये जो आपकी जैसे कि हम लोग जैसे as we have covered in the Golgi bodies, the parallel tubule like structure हमने क्या बोला था शिवम? So what are the three things which are made up of, which are making the Golgi bodies or the ER? Cisternae, yes, tubules and vesicles. So major आपका क्या था? Cisternae, tubules और vesicles, so आपके simple circular like structure है ना? So इसमें भी आपका वही है. So these are your, just make this diagram as simple as you can. नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. व्हेन वी स्टार्ट, एंड जैसे कि हम लोग सपोज दैट पेपर 1 स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वी डू नॉट स्टार्ट डायरेक्टली विद द प्रोटोजो और समथिंग लाइक दैट. वी एक्चुअली टॉक अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिज्म. हम लोग बेसिक RH विटेकर सिस्टम से पढ़ते हैं, जैसे कि जो आपका एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वहां से शुरू करते हैं. फिर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे तो सारी फाइलम में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जैसे कि अगर हम लोग बात करें जर्म लेयर्स की, है ना, तो आपको अब जैसे बोले कि डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें ये सिलोम है, इसमें ट्रू सिलोम है, इसमें फॉल्स सिलोम है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप मुझे बताते चले जाओगे, क्योंकि वो सारे जो कॉन्सेप्चुअल है कि जर्म लेयर क्या है, उसकी अगर जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे तब तक आप फाइलम को समझ ही नहीं पाओगे. लाइक हाउ फ्रॉम दैट प्लेटिहेल्मिन्थिस टू एस्केहेल्मिन्थिस के बाद एनिलिडा कैसे आ रहा है, कैसे वो सिलोम डिवाइड हो रहा है तो ट्रू सेगमेंटेशन बन रहा है या मेटामर्स बन रहा है. ठीक है, तो ऐसे आपका जो कुछ लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे लाइव पढ़े, जैसे कि सेल जब हमने शुरू किया था, पढ़ा हुआ वो लाइव हमने उस दिन लाइव करा था. तो सेल जिस दिन शुरू किया था, वी हैव टॉक्ड एवरीथिंग इन अ वेरी क्रक्स मैनर कि सेल है क्या, किस ऑर्गेनेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, अभी वेट, जस्ट एज वी गोइंग टू स्टार्ट द लाइसोसोम यू विल गेट. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि ये वाला जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, आज क्या है, टुडे इज थर्सडे, राइट, सो मे बी ट्यूसडे ऑनवर्ड से हम नए टॉपिक सेल साइकिल पे जाएंगे. सो व्हेन वी विल कवर द सेल साइकिल इट बिकम अगेन वेरी न्यू, कि फिर से सेल बताना पड़ेगा, फिर से न्यूक्लियस सब कुछ होगा. या तो आप न्यूक्लियस से ज्वाइन कर लो या तो आप सेल डिवीजन से ज्वाइन कर लो, वो भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 आर नॉट कोरिलेटिंग विद ईच अदर. ऐसा नहीं है कि पेपर 2 कर लोगे पहले तो पेपर 1, या पेपर 1 करने के बाद ही पेपर. श्योर में आपने पेपर 1 करा है ना, इज इट रिलेटेबल विद द पेपर 1 एंड पेपर 2? ऐसा रिलेटेबल नहीं है कुछ खास. ठीक है, और आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसके लिए हम सैटरडे टेस्ट लेते रहते हैं, लाइक नॉट रेगुलर सैटरडे. जब एक यूनिट कवर हो जाएगी, तो ये हमारी सेल बायोलॉजी जब कवर हो जाएगी फिर टेक द टेस्ट. ठीक है, तो उससे समझ आता है कि जितना हमने क्लास में समझा है या जितना हमारे पास नोट्स में है, क्या उसमें हम पीवाईक्यूज रखते हैं. जैसे कि अभी और पीवाईक्यूज का एक मेथड क्या है, अभी यूनिट कवर हो जाएगी, देन जो आपके 2017 ऑनवर्ड से जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए उन सबको हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे. So that available information से आप उस PYQ को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. ठीक है, नेक्स्ट मेक द हेडिंग लाइसोसोम, द न्यू ऑर्गेनेल. देखो अब लाइसोसोम है क्या, जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज का, सपोज दैट अगर हम बोल रहे हैं that car is moving, so why car can move? Because car has a structure of the moving, that is the vehicle, that is the engine, similar, right? So कोई भी जैसे कि लाइसोसोम को हम लोग अगर बोले that लाइसोसोम का फंक्शन है degradation of unused cell particle, ये इसका सिंपल फंक्शन है. ठीक है, राम आपको आइडिया है कि लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं, सीसाइडल बैग, है ना, दिस इज वन ऑफ. तो व्हाई वी आर सेइंग दैट किसी भी चीज को हम कॉमन नेम क्यों देते हैं, या तो उनका अपीयरेंस ऐसा होता है सीसाइडल बैग ऑफ द सेल, किसी भी चीज को व्हाई वी से दैट एनीथिंग एज अ कॉमन नेम. ठीक है, या तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है या तो फिर उसका फंक्शन ऐसा होता है. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट लाइसोसोम का जो फंक्शन है वो उसका क्या है, degradation of the unused cell particle or unused cell organelle. जैसे कि suppose that this is a cell,
तो इस पर्टिकुलर सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ है, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक दैट। हर पर्टिकुलर सेल, कोई भी चीज हमेशा अपने एक्सपायरी डेट के साथ आती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। सो वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया की एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होगी, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया की पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होगी। इवन कंप्लीट सेल की भी लाइफ साइकिल होगी, जैसे कि आपका आरबीसी, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, उसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 120 डेज, ठीक है। आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 65 days. That means I'm simply trying to say here that everything comes with the expiry date, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेल, अगर मैं सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर ये आपका ईआर है, ठीक है, ये आपके ईआर, ये आपके गोल्जी बॉडीज है, सारे कुछ है। अब सभी कुछ का एक पर्टिकुलर डिग्रेडेशन टाइम होगा। अब ये डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, डिग्रेड होने के बाद ये घूमती रहेंगी ना इसी में, राइट, इधर दे विल जस्ट मूविंग अराउंड, और वो क्या करेंगी, इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होंगी और ब्लड में जाएंगी और ब्लड से आपका प्योरिफिकेशन होगा। बट दिस बिग माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स अ वेरी बिग, नो, सो इट कैन नॉट पास थ्रू योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने ट्रांसपोर्ट कवर कर लिया है ना। इट कैन नॉट पास थ्रू एवरी सिंगल टाइम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और भी बहुत सारे फंक्शन है, रिकॉग्निशन का, हॉर्मोन्स का, किसको पहचानना है, किसको नहीं पहचानना है, बहुत सारे फंक्शन है। तो वो हमेशा इतने बड़े बड़े लोगों को क्लोरोप्लास्ट, गीजिया, इन सबको अलाउ नहीं करेगी कि ठीक है तुम पास होते रहो, देखिए ठीक है तुम पास हो जाना थ्रू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट डू वन थिंग, तुम छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड होके आओ, राइट। तो दिस डिवीजन, अब ये पर्टिकुलर जो माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई भी सेल ऑर्गेनेल है, इज डेफिनेटली मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टिकल, CHO या कोई भी तो बन के जाएगी ना। जैसे कि एक ब्रेड का पीस जब तक बाहर रखा रहता है वो अच्छा होता है, हेल्दी होता है ना। जब उसको बाहर निकाल के रख देते हैं, या ह्यूमन बॉडी या कोई भी चीज जब वो डेड हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिग्रेडिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब व्हेन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट द कंप्लीट सेल, बिकम एंडेड, अब ये क्या हो गई, डिफंक्शनड हो गई। अब दिस इज नॉट इन द फंक्शन, नॉट हैज टू बी डिग्रेड। अब ये क्या हो जाएगी, छोटे 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 पार्टिकल्स में डिग्रेड हो जाएगी और कहीं से इन सब के मेम्ब्रेन के थ्रू इसको एक कवर कर लिया जाएगा कि ठीक है, जैसे हम लोग घर में क्लीनिंग करते हैं तो सारा क्लीनिंग आउट एक पर्टिकुलर प्लास्टिक बैग में, किसी बैग में हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये प्लास्टिक बैग क्या हो जाएगा, इस लाइसोसोम के पास आएगा और अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ दैट अनयूज्ड सेल पार्टिकल। क्यों कर पा रहा है ये, क्योंकि इस लाइसोसोम के पास, बिकॉज ऑफ दिस लाइसोसोम हैज द so many cleaning agent, वो एजेंट क्या है आपके होते हैं, that cleaning agent is the enzymes, ठीक है। so what is lysosome now, lysosome is a single membrane structure which is filled with that almost 50, कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व हो सकती है, राइट, 50 हाइड्रोलाइटिक, या सिंपल ऐसे भी कंसीडर कर लो 50 एंजाइम्स। समझ आ गया। Any cell particle, when it become defunction, when it become not important, it go and merge with that lysosome and it become cleaned up. अभी क्या हो गई आपकी सेल, क्या हो गई, cleaned up, ठीक है। That is the concept of the degradation of unused particle. Now we talk about the suicidal bag of the cell. Why we call the suicidal bag of the cell? अभी हमने just what we have covered, the lysosome is a single membrane structure which is filled with, यही structure है, simple, that is the structure of the lysosome, ठीक है। जैसे कि suppose that if we talk about the mitochondria, so mitochondria का structure क्या है, like this is the structure of the mitochondria. क्यों, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, F0 F1 पार्टिकल, क्रिस्टी, इंटर मेम्ब्रेन स्पिनर्स, है ना। सो अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, DNA, फिर यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, राइबोसोम। सो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, और बेटर से दैट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स फंक्शन, है ना, आपका क्या है इसके पास स्ट्रक्चर, इट हैज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। आप उसमें नेमिंग कर सकते हो, लाइसोसोम में आप कोई नेमिंग कर सकते हो नहीं, क्योंकि इसका काम ही सिर्फ है, इट इज अ फिल्ड बैग इन विच द सो मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर फिल्ड, ठीक है, दैट मींस सिंपल। अब इसको हम लोग सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हैं, अब इस पर्टिकुलर बैग की, जैसे कि सपोज दैट आपने क्या किया, सारा कुछ कचरा क्लीन करके एक बैग में फिल कर दिया, आप स्टिल फिल करते जा रहे हो, फिल करते जा रहे हो, फिल करते जा रहे हो, कुछ भी बाहर से पार्टिकल आ रहा है वो जरूरत नहीं है, वो भी लाइसोसोम के पास चला जाएगा, कुछ भी अनयूज्ड पार्टिकल वो लाइसोसोम के पास। अब इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की कैपेसिटी है
अल्टीमेटली इट इज फिर जब भी कोई इसमें जाता है तो वो एक्चुअली इसी एंजाइम को फॉर्म करने में हेल्प करता है, बिकॉज नॉट इज अ डेड, जब वो डेड हो जा रहा है तो एक हार्मफुल एंजाइम भी तो बना रहा है. तो एनी माइटोकॉन्ड्रिया, एनी काइंड ऑफ पार्टिकल विच इज एंटरिंग और डिग्रेडिंग इट, इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग दैट एंजाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब आप फिर भी क्लीन कर रहे हो, अभी क्या होगा, ये जो होगी रप्चर हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी इसकी ओर, और इसके पर्टिकुलर एंजाइम्स विल बी फ्लोट, है ना, पूरे सेल में फैल जाएंगे. अब ये एंजाइम कैसे थे, जो आपके डिग्रेड कर सकते थे. अब जब ये एंजाइम यहाँ पे व्हेन इट इज स्प्रेड इन दैट ऑल ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका काम ही डिग्रेडेशन था, तो जो इन फंक्शनल भी सेल ऑर्गेनल होंगे उनको भी क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे. दैट इज व्हाई यही लाइसोसोम को हम लोग क्या बोल देंगे, सुसाइडल, खुद तो मर रहा है और सबको भी लेके मार रहा है. अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर लाइसोसोम इज अ मेंबर ऑफ द सेल ना, ये फैमिली है, इसका मेंबर है, इसने खुद को भी मारा और सबको भी मारा. समझ आ गया. सो आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, लाइसोसोम से आपका बेसिक फंक्शन पूछते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूछते हैं. देयर इज वन थिंग, जैसे कि अगर लाइसोसोम फंक्शनल नहीं है, अच्छा टेल मी नाउ वन थिंग, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन इन योर यूपीएससी, जस्ट आस्क मी अगर नहीं समझ आता है, कि अगर लाइसोसोम, नाउ यू गाइस टेल मी, इफ द लाइसोसोम विल बी नॉन फंक्शनल और डिसफंक्शनल, क्या होगा. राम, जितना कॉन्सेप्ट समझा है बस उससे ही बताओ. अगर लाइसोसोम सपोज फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, सेल में वो जो उसका अनयूज्ड पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, कलेक्टेड होता रहेगा, है ना, दैट इज सिंपल, राइट ऑनलाइन गाइस. तो वो क्या होगा, कलेक्ट होता जा रहा है. help from preventing mutation because it is responsible for digesting the misfolded proteins. Yes, it is responsible for not only the digesting the misfolding proteins, actually it is responsible for digesting of any kind of unfolded, misfolded, not used, degraded, किसी भी चीज को जो घर में आपके रिक्वायरमेंट नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ डस्टबिन बॉक्स, सब कुछ उसमें डालो, बट डस्टबिन बॉक्स इज फिल्ड विद दैट सेल्फ रिसाइक्लिंग. ठीक है, दैट मीन्स सिंपल. So if the lysosome will be non-functional, there is an accumulation of so many proteins. Suppose that if we talk about this mitochondria, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर है वो भी किसी न किसी प्रोटीन से या किसी न किसी कंपोनेंट से बनी होगी. नाउ देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स, और उससे आपकी बहुत सारी डिजीज होती है, सच एज वन डिजीज नेम इज टाइशैक डिजीज. समझ आ गया. बिकॉज ऑफ दैट, कितना भी आपका अच्छा घर हो या कितनी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो जाए, इट्स सोसाइटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो, अगर 2 दिन कचरा उठाने वाला नहीं आएगा तो क्या होगा, डिजीज फैलने लगेंगे ना. दैट इज. ठीक है, चलो. सो नाउ हाँ, अभी हम लोग देखो, गुड क्वेश्चन. अभी लाइसोसोम का आपका कॉन्सेप्ट क्या आता है, लाइसोसोम में आपके पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम आता है. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मीन्स मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर. हाँ, लाइसोसोम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. लाइसोसोम जब भी कुछ देखो, लाइसोसोम का एक, वैसे तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द लेटर, अभी जब एक्सप्लेन करूंगी तो मैं करूंगी. सपोज है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या बेटर से दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. हम लोग ने वो पढ़ा था रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, है ना. राम, जब भी कुछ पार्टिकल अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर वो यूज नहीं भी हो रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका कोई हार्मोन आया, ठीक है, हार्मोन आया, उसने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे फंक्शन किया, उस फंक्शन होने के बाद वो घूम रहा है. अब ये जो घूम रहा है, और ये आपकी क्या है, ईआर मेम्ब्रेन. जैसे कि आपका लाइसोसोम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना राम, ऐसे आपका गोल्गी बॉडीज का कोई स्ट्रक्चर नहीं है. दीज आर जस्ट मेम्ब्रेन बॉडी, हम लोग कर चुके हैं, इसमें आप देख सकते हो. सो अब ये घूम रहा है, अब ये क्या करेगी, यहाँ वाली सेल या यहाँ वाली सेल, जो भी आपके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे. ठीक है, आल्सो दैट, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम. ये आपका अभी जस्ट नया फॉर्म है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं. लाइसोसोम कुछ अलग से नहीं बनता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अलग से बनता है, न्यूक्लियस अलग से बनता है, लाइसोसोम कुछ अलग से नहीं बनता. अब इसी को इसने क्या किया, कवर कर लिया, इसको हमने बोला प्राइमरी लाइसोसोम. अब इस लाइसोसोम बहुत सारी चीजें खाने के बाद, इसको खाया, उसको खाया, इसको खाया, अब ये और बड़ा हो गया. अब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. अब ये इतना बड़ा हो गया कि खुद को भी खा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी लाइसोसोम या ऑटोफेज. ये स्ट्रक्चर आपका आता है. तो कोई भी लाइसोसोम का मतलब अगर शिवम आपका फॉर्म से है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम इज वेरी मच एक्टिव, बिकॉज इट हैज, जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उसके पास कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो सेकेंडरी लाइसोसोम इज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइसोसोम which are having that so big capacity to engulf any kind. So yes, every lysosome, yes, every एक्सोसाइटोसिस, लास्ट में लाइसोसोम का फंक्शन ही एक्सोसाइटोसिस है. जब वो खुद नहीं कुछ भी कर पाएगा, तो फाइनली अभी एक स्ट्रक्चर है, ओके आई विल शो दैट.
देखो ये है आपका लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। ये आपका पॉली मॉर्फोलॉजी में मुझे बताना था, बट ये विजिबल है, ब्लर तो नहीं है। देखो ये क्या आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका जो भी, ये आपकी क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसका जो भी रिक्वायर्ड नहीं था वो चला गया सिक्रीशन में आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम, ओके, उसके बाद व्हाट इज अ प्राइमरी लाइसोसोम? यहाँ पे इस गोल्जी बॉडी से ये प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बन रहा है? Anyone, Ashali or Manisha, Rohit, anyone wants to explain that how from that Golgi bodies this is a primary lysosome, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, कैसे बन रहा है? Golgi body से just lysosome कैसे बना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं guys? यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यस एग्जैक्टली, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से कंटिन्यू। Golgi bodies में क्या हो रहा था? प्रोटीन फोल्डिंग हो रही थी, है ना। अब कोई भी प्रोटीन आपकी फोल्ड हुई बट वो मिस फोल्ड हो गई, जैसे कि अभी अशाली ने बोला, अब उसका कोई काम तो है नहीं। अब यहाँ पे उसको एक मेम्ब्रेन बाइंड कर लेगी। मिस फोल्डेड प्रोटीन मतलब कोई फंक्शन नहीं है उसका। अब उसको दिस प्रोटीन विल गोइंग टू बी बाइंड, व्हेन द प्रोटीन विल बी गोइंग टू बाइंड, अब इसमें इस प्रोटीन के डिग्रेडेड पार्टिकल है व्हिच विल वर्क एज अ एंजाइम। समझ आ गया ये आप? यस Ma'am, is it as you said, the blood is formed from the exterior, means the transface of the Golgi apparatus. yes So yes are the blips getting but off from the transphase and forming the lysosomes? yes we have covered now in the Golgi body, that is the cis phase, that is the trans phase. So obviously always from the trans phase only, okay, because from here the protein is secreting after the coming from that smooth rough endoplasmic reticulum, and protein is coming here folding हो रहा है, नहीं प्रोटीन हो पाएगा, अगर वो फंक्शनल में नहीं बन पाया, so it is become forming the primary. Yes, that is the trans phase, ठीक है, maturing phase, that is the bleps. Got it? अब इसने क्या प्राइमरी लाइसोसोम का स्ट्रक्चर समझ आ गया? देखो प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी चीज बाहर से, अभी तो एक्सोसाइटोसिस इसको रहने दो, कोई भी चीज अंदर आई, पिनोसाइटोसिस, फ्रूट ड्रॉपलेट्स, कोई भी चीज, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, यहाँ से कोई चीज अंदर आ रही है, पिनोसाइटोटिक वेटिक, उसका काम नहीं है या उसका काम हो चुका है, वो क्या बना रही है आपकी सेकेंडरी लाइसोसोम। फूड वैक्यूल्स, फैगोसोम, जैसे कि आपकी मैक्रोबॉडीज, जो आपकी इम्यून सेल्स होती है, वो क्या करती है, इम्यून सेल्स क्या करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करती है, खा लेती है। अब खाने उसको उन्होंने सपोज दैट ये वायरस एंटर करा, इन्होंने खा तो लिया उसको, दे हैव जस्ट डाइजेस्टेड दैट। अब उस पर्टिकुलर वायरसेस के पार्टिकल्स को क्या करेंगी, वो किस में भेज देंगी, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। किसी भी चीज का अनयूज्ड पार्टिकल, उसको हमने क्या बना दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम। शिवम, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। आफ्टर सम टाइम जब इसका प्रॉपर फंक्शन हो जाता है, either it become called the heterophagosome or it form that ऑटोफेजिक वेसिकल, खुद ही डिग्रेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके न्यूट्रलाइज होगी और धीरे से क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर चली जाएगी। समझ आ गया? दैट इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल, जैसे कि ह्यूमन की एक लाइफ साइकिल होती है ना, बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा हो रहा है, फिर समथिंग, ये आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल किसी भी चीज का फ्यूचर, ठीक है। किसमें, कौन चीज, लाइसोसोम अगर ऑटोफेजिक, अभी हम लोग लिखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म में, तो जब हम लोग ऑटोफेजिक या फिर रिमेनिंग बॉडीज का स्ट्रक्चर लिखेंगे, you'll get it। ये बस्ट होके, अच्छा इसमें हम लोग सुसाइडल बैग थोड़ी दिखा रहे हैं। इफ यू आर आस्किंग व्हाट इज सुसाइडल बैग कंडीशन, सुसाइडल बैग एक कंडीशन है शिवम, इट इज नॉट ऑलवेज अकर, हाँ हमेशा नहीं होती। अगर उसकी कैपेसिटी जितनी, जब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होने लगती है, तो वो जनरली एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आगे, एक्सोसाइटोसिस हमने कवर करा है ना, तो जनरली इट बिकम, और ये आपका ये कहां पर है, सपोज दैट ये सारा प्रोसेस किसमें हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ दिस होल प्रोसेस हैपनिंग इन द आरबीसी। अब ये आपके लाइसोसोम की फॉर्म में एक्सोसाइटोसिस चला गया, अब यहाँ पे आपका ब्लड क्लीनिंग हो जाए, कि ब्लड में आपका फ्लूइड कंडीशन में आके क्लीन हो जाए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज, नॉर्मल प्रोसेस ये है आपका, बाहर रिमूव होके क्लीन हो रहा है, ठीक है। समझ आया राम? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टार्ट से कोई भी टॉपिक शुरू करोगे इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मिड हेडिंग लाइसोसोम, just give me the minute।
It was discovered. ठीक है, okay. Thank you, Ram. It was discovered accidentally by the Belgian scientist named Christian D. Duve, named Christian D. Duve, D-U-V-E, Christian D. Duve, yeah, D. Duve, in 1955. In 1955, through the fractionation technique, the organelles were discovered, the organelles were observed under electron microscope by Novikov in 1956. In 1956, he also coined the term lysosome. शिवम, लाइसोसोम में कोई वर्ड हमें दिख रहा है क्या, कुछ रिजेम्बलेंस सा? तो ऐसे ठीक है. सोम मीन्स बॉडी. सोम मीन्स होता है बॉडी. स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम, सोम मतलब होता है बॉडी. पहला वर्ड अब बताओ. यस, एग्जैक्टली. सो दिस लाइसिस का मतलब ही क्या हो रहा है? किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने वाली. सिंपल, राइट इट डाउन. ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म लाइसोसोम. ब्रैकेट में लिखो lysis, that is digestive, or breakdown soma means body. Bracket close. These are small vesicles. Vesicles एक common term है, ठीक है? These are small vesicles which are bounded by a single membrane. And contain hydrolytic enzymes in the form of minute crystalline granules of 5 to 8 nanometer. Give me a minute. Next, occurrence. Next, make the heading occurrence. The lysosome occur in most animal and few plant cells. क्या लगता है शिवम, क्यों? प्लांट सेल में फ्यू क्यों? अरे इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना. हमारी बॉडी में स्टोरेज की फॉर्म पे प्रोटीन और लिपिड ही स्टोरेज होता है. उनकी बॉडी में स्टोरेज की फॉर्म पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना? जैसे कि आपके रेसिन,
तो उन सब में ये एक्यूमुलेट हो सकता है जो आपके मटेरियल है ना, बट ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेशन मतलब प्रॉब्लम या डिजीज, राइट, दैट इज वन ऑफ द रीजन, यू नो. दे आर absent in bacteria, they are absent in bacteria and mature mammalian erythrocytes and mature mammalian erythrocytes, full stop. Few lysosomes occur in muscle cells or acinar cells or acinar cells of pancreas, acinar cells of pancreas. Some cells such as leukocytes, especially granulocytes are a particularly rich source of lysosomes. क्यों? जस्टिफाई दैट. अभी तो हम लोग पूरा लाइसोसोम डिस्कस बात कर चुके हैं. हाँ, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, है ना, उसको बहुत सारा इनगल्फ कर रही है, तो उनके पास बहुत सारे पार्टिकल की फॉर्म है, तो उनको लाइसोसोम क्लीन करने के लिए ज्यादा चाहिए. Right on. The lysosomes are so large sized which can be observed under light microscope, क्या लगता है कौन सी बॉडी की सेल में सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स होंगे? कौन सी बॉडी ऑर्गन में? ऐसे इंटरनल ऑब्वियसली, जहां पे क्लीनिंग सबसे ज्यादा हो रही होगी. स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीन इज कॉल्ड yes, Ashali, Not the graveyard of cells. the graveyard of all RBC. Yes, exactly, very good, Ashali. So वहां पे क्या हो रहा है, हर बहुत सारी आरबीसी को जाके डेड करना पड़ रहा है, तो वहां पे इसलिए राइट डाउन. some cells are rich in lysosomes such as spleen, liver, etc. Next, we're getting ultrastructure, the simple structure of lysosome. The lysosomes are round, vacuolar structure. Which remain filled with dense material and are bounded by single unit membrane. Their shape and density vary greatly. Next, they are around 0.2 to 0.5 micrometer. They are around 0.2 to 0.5 micrometer in size. Full stop. Although the size and shapes of lysosome vary. From cell to cell, and from time to time. What is the meaning of time to time? Yes, है ना, तो ब्रैकेट में लिखो, because they show polymorphism.
Secondary lysosome क्या होगा? Much bigger than that. Secondary lysosome is the active one for that function, as they show polymorphism. Next point, इसी में. However, on the basis of three criteria, the cellular entity can be identified as lysosome. The cellular entity can be identified as lysosome. First, it should be bounded by a limiting membrane. It should be bounded by a limiting membrane. Second, it should contain two or more acid hydrolases, salt. It should demonstrate the property of enzyme latency when treated with other organelles membrane structure. Next, ये point form में हम लिख रहे हैं ना. Next, it includes dense stroma. And large vacuoles. Full stop. It contains around 50 hydrolytic enzymes. Bracket में लिखो. Produced in ER. क्यों? Why they are producing in ER? एंजाइम क्या है? प्रोटीन. Produced in ER and targeted to this organelle. इसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे. These are acid hydrolases. Which can digest most of the biological substances. And act at acidic pH. Next point. All these enzymes have an important property. Full stop. Acidic condition is maintained by pumping protons into the interior of lysosomes by active H+ pump. Full stop. Some of the hydrolytic enzymes are
हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स आर, अब H प्लस आ रहा है तो ऑफकोर्स एसिड आर एसिड फॉस्फेटेजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस, एसिड न्यूक्लियेजेस, एसिड न्यूक्लियेजेस, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, कैथेप्सीन्स, कैथेप्सीन, पेप्टाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ये एंजाइम्स के नेम है, लाइसोजाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। these enzymes these enzymes ये 50 एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। these enzymes can be classified mainly into 6 categories, mainly into 6 categories। तो पहले 6 कैटेगरीज क्या हो सकते हैं? तो पहले तो 4 वही हो गए आपके, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना, जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, जैसे कि अभी हमने बोला न्यूक्लियेजेस, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट राइट डाउन प्रोटीजेस एंड पेप्टाइडेजेस, प्रोटीजेस एंड पेप्टाइडेजेस, क्योंकि they have the ability to digest anything or anything is made up of mainly these 4 molecules। एग्जांपल में एक लिख लो, पेप्टाइड प्रोटीज एंड पेप्टाइडेजेस, कैथेप्सीन, कैथेप्सीन CATHEPSIN, सीधे लिख लो एज एग्जांपल कैथेप्सीन, ऐसे करके लिखते जाएंगे एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस लिख लो एसिड, एसिड राइबोन्यूक्लियेजेस, एसिड राइबोन्यूक्लियेजेस एक्सेट्रा। डीऑक्सी भी होता है, ऑक्सी भी होता है, इसमें 2 ही होते हैं एक्चुअली। 3 थर्ड फॉस्फेटेजेस, थर्ड फॉस्फेटेजेस, इसमें लिखो फॉस्फोडाइस्टरेज या फिर बेसिक लिख लो एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। नेक्स्ट लाइपेजेस, लाइपेजेस जो कि आपके लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। नहीं आता है तो साथ में लिख लेना है सर, बिल्कुल नोट्स बनाते समय इजी होना चाहिए। लाइपेजेस एंजाइम्स एक्टिंग ऑन लिपिड्स, एग्जांपल एग्जांपल जैसे कि ईस्टर भी आपका एक लाइपेड लिपिड होता है, तो ईस्टरेजेस, ईस्टरेजेस या फॉस्फोलाइपेज कुछ भी लिख लो। Fifth, enzymes worked on enzymes acting on oligosaccharide chains, oligosaccharide chains of glycoproteins and glycolipids, of glycoproteins and glycolipids, डैश करके लिखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोज आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, तो गैलेक्टोज एक आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस एक्सेट्रा। लास्ट enzymes acting on glycosaminoglycans. This is a mixture of glycogen and proteins, ठीक है। glycosaminoglycans, example hyaluronidase, example hyaluronidase, hyaluronidase, ठीक है, hyaluronic acid। नॉर्मल पॉइंट नेक्स्ट लिखो
The lysosome membrane is slightly thicker than that of mitochondria, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम पे काम करना है ना. The lysosome membrane is slightly thicker than that of mitochondria. It contains substantial amount of carbohydrate material, particularly sialic acid. Sialic acid. Continue इसी में. Lysosomal membrane is generally strengthened by cholesterol, heparin, cortisol, etc. Full stop. इसी को point में continue. They are called membrane stabilizer. एक पॉइंट और लिखो मेम्ब्रेन के बारे में. Most lysosomal membrane proteins are unusually highly glycosylated. ऑनलाइन ये वर्ड हमने कहां सुना है इसके पहले? Where we have heard this word earlier? Shali, Manisha, Rohit, tell me this answer. Where we have heard this word earlier? Yesterday we have just covered that. Golgi protein for Yes. Yes, exactly. So we have heard the word glycosylation. Glycosylation is addition of that carbohydrate unit on the protein. Remember? और वो कहां पर हो रही थी आपकी Golgi bodies में. This is a major function of the Golgi bodies. Endoplasmic reticulum से, if you see this diagram where it has been. Yes. यहां से आपका एक नॉर्मल प्रोटीन की चेन निकलती है. उस पर्टिकुलर प्रोटीन को आपको मॉडिफाइड करना है, उसमें फोल्डिंग करनी है, उसमें आपको ग्लाइकोसाइलेशन करना है. एवरीथिंग. दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आफ्टर दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर इज अ Golgi bodies. Golgi bodies में आप क्या होगा? इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा. एंड दैट मॉडिफिकेशन इज बिकॉज ऑफ द one of the process of this modification is the glycosylation. So that means glycosylation से क्या हो रहा है? प्रोटीन बिकम स्ट्रॉन्ग, है ना. एक लॉन्ग अमाइनो एसिड की चेन, सपोज दैट आप एक चेन लेके जा रहे हो, उसमें बहुत सारे आयंस है, वो किसी से भी रिएक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट पे. अब आपने क्या किया? उसको प्रॉपर्ली फोल्ड कर दिया, उसमें आपने क्या लगा दिया? कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दी. कार्बोहाइड्रेट जनरली आर लेस रिएक्टिव, है ना. C6H12O6, इट्स नॉट दैट मच. So that means अगर if I am saying that the membrane of the lysosome is highly glycosylated, मतलब इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं, एक तो पहली बात ये थिकर होती है ना. सियालिक एसिड इज अगेन अ कार्बोहाइड्रेट इज लेस रिएक्टिव. तो इसके अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड ऑफ दैट? वेरी रिएक्टिव एंजाइम्स, है ना. तो इसके लिए हमें मेम्ब्रेन, जब आपके पास ज्यादा हार्मफुल डस्ट कचरा हो तो आप उसके लिए थिक प्लास्टिक कवर का भी यूज करते हो. तो बिकॉज ऑफ दैट सियालिक एसिड, because of that high concentration of cholesterol, because of that glycosylation of that membrane protein, that means proteins are very much stable, है ना. जितनी ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में रहेगी, जितनी ज्यादा कवर्ड फॉर्म में रहेगी, प्रोटीन तो बन गई आपकी, वापस को जितनी अच्छी कवर्ड फॉर्म में करा, किसके थ्रू? ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू, देन इट विल बी लेस रिएक्टिव, है ना. दैट इज व्हाई, क्योंकि एंजाइम्स अदरवाइज बहुत जल्दी रिएक्ट करें. समझ आ गया? आई डोंट. Glycosylated, which help and protect them from lysosomal enzymes
in its matrix, from lysosomal enzymes in its matrix. Okay, now write it down. Types of lysosome or polymorphism. This is a very important. Make the star over here. Lysosome के पूरे chapter में this is a very important. ठीक है? So the topic is types of lysosome slash polymorphism. Polymorphism in lysosome. Suppose that अगर यही क्वेश्चन है आपका, how will you start the introduction? चलो बताओ, बहुत दिन हो गए. How will we start the introduction of this question? Shivam? Forget about it. Not this. What is lysosome? Yes. ठीक है. देखो, start with lysosome का बहुत basic structure है. Lysosome कुछ भी define करने के लिए है नहीं. Lysosome is a single membrane bound structure filled with that various hydrolytic enzymes. That's it. End of the lysosome की definition. ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे? ये तो 2 लाइन में आ जाएगा आपका, बट मिनिमम 4 लाइन तो होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट. From the scientist name who coined the term as well as discovered it. So you are saying that you will start with the scientist name. Yes, this is one of the various good method. ठीक है? So yes, we can do that. हम क्या कर सकते हैं? Scientist name भी लिख सकते हैं प्लस लाइसोसोम की डेफिनेशन. पहले अगर लिख रहे हो तो scientist name लिख देंगे. या फिर I am telling you the best method of this polymorphism. अगर 15 मार्क्स का है, although it's rare, but ठीक है, अगर 15 मार्क्स का है तो इसके साथ कुछ ना कुछ और ऐड होगा, या तो फंक्शन ऐड होगा या तो कुछ तो ऐड होगा. But suppose that this is the first part of your lysosome. ठीक है? Then start with that lysosome is a single membrane bound cell organelle which shows the polymorphism. The polymorphism means various. Just break this word, na. Always we used to do that. है ना? Poly means multiple या very या many. Morph मतलब morphology मतलब structure. ठीक है? Lysosome is one of that cell organelle which shows the multiple structure from cell to cell and time to time. हो गया 4 लाइन. ठीक है? अगर 15 मार्कर का है Ashali, then we can write about so many things. जैसे scientist लिखेंगे, है ना? या फिर देखो अगर 15 मार्कर का है तो what we'll do? Start with the scientist name or the discovery of it, define the lysosome, and then in the body make the heading again polymorphism in the lysosome. Right? So when we are making the polymorphism in lysosome, अगर 10 मार्कर का है तो we'll start writing about the polymorphism. 4 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, whatever the thing. But अगर 15 मार्कर का है तो first you need to define properly what is the polymorphism. समझ आ गया? So depending upon the number of questions, depending upon that, what is the marking of that question? But you have to have defined, शिवम, इस वर्ड को तो आप सबको डिफाइन करना ही करना है. या तो आप इंट्रोडक्शन में कर लो या तो आप बॉडी में कर लो. ठीक है? चलो. My voice is so melodious. No, my voice is not melodious. चलो, write down. Lysosomes are extremely dynamic organelles. यहाँ से भी लिख सकते हो. Lysosomes are extremely dynamic organelles exhibiting the various or many forms in their morphology called polymorphism. It is one of the most remarkable morphological characteristic. It is one of the most remarkable morphological characteristic. Next. On the basis of morphology, their content, functions, lysosomes are divided
lysosomes are divided and shows majorly three forms. फर्स्ट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट बेटर हेडिंग में लिख लो फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम्स. फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम्स. They are the small body. They are small bodies. This is a very important, guys. ठीक है? These are small bodies, comma vesicles. Vesicles like newly formed structure where enzymatic content is synthesized, by the ribosomes. They are also called virgin lysosomes. Storage granules, protolysosomes, etc. They are the newly formed organelles. ये सेल के अंदर ही बन रहा है ना, न्यूली फॉर्म ऑर्गेनल्स bounded by the single membrane and typically having a diameter of 100 nanometer. Full stop. They contain the degradative enzymes. Which have not participated in any digestive process. Full stop. These are produced from Golgi apparatus. Which contain first acid phosphatase. Reactions takes place. Full stop. In the primary lysosomes, generally the inactive enzymes are present. Next, secondary lysosomes. These are also called heterophagosomes. Or digestive vacuoles. Or heterolysosomes. Or lysosomes. Or phagolysosomes, etc. These are formed with the fusion of primary lysosomes with the cytoplasmic vacuoles containing extracellular substances brought into the cell
brought into the cell by any of variety of endocytic processes such as पिनोसाइटोसिस. हमने करा नहीं ना पिनोसाइटोसिस. हाँ, आरएमए के बाद सीधे हम शिफ्ट हो गए पिनोसाइटोसिस पे. आई हैव टू मेक द पिनोसाइटोसिस, phagocytosis, RME, etc. The digestion of engulfed substances, full stop. The digestion of engulfed substances takes place by the enzymatic activities of hydrolyting enzymes of the secondary lysosomes. These secondary lysosomes contains the enzymes against the material to be digested. Next point. It is full complement of acid hydrolysis. The phase of which can be divided into three forms. This is the one thing I want to tell. Sometimes in some of the books you will see the lysosomes का जो polymorphism है, ठीक है, वो 3 है, कहीं 4 है. तो first हम लोग बोलते हैं simple the primary lysosomes. So first we say that primary lysosomes. ठीक है. Second we say that secondary lysosomes. As we have explained it, we got it. Secondary lysosome के बाद obviously वो autophagy में जाएगा. अगर वो बाहर नहीं जा पा रहे तो वो कहाँ जाएगा? Autophagy में. तो third we say that autophagy. तो auto means self, phagy means engulfing, खाना, है ना? Phagocytosis, सेल को खा जाना. तो थर्ड आप देखोगे phagocytosis and fourth देखोगे आप residual bodies. ठीक है. Sometimes you will see this, but we are going to cover that. So हम लोग क्या करने जा रहे हैं? Secondary lysosomes generally sometimes they become not that much strong, or because we know that हमने इस स्ट्रक्चर में क्या देखा, तो जो आपके प्राइमरी राइबोसोम्स है, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करते हैं. So what we are seeing that, देखो, there's one more thing जो generally आपका प्राइमरी lysosomes होता है ना. So generally what the primary lysosomes is, generally this contain a single type of acid hydrolysis. जनरली एक ही प्रोटीन से मिलकर बना है, जो भी मिसफोल्डेड है, जो भी कुछ है, मतलब सिंगल प्रोटीन से मिलकर बना. दैट इज व्हाई वी आर आल्सो कंटेनिंग कि इनएक्टिव है ये, है ना. वी आल्सो से दैट इनएक्टिव है. तो समटाइम्स क्या होता है, अगर हिट्रो, ये जो आपका सेकेंडरी लाइसोसोम है, अगर सेल इज बिकम नॉट दैट मच एक्टिव, ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा वो नहीं होती उसमें, ऑफ कोर्स इट इज अकरिंग विद द, इसीलिए ब्रेन सेल के पास रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है ना. तो ब्रेन सेल्स आपका कंटिन्यूअसली इतना फंक्शन करती है, बट उसका बहुत ज्यादा मटेरियल डिग्रेडेशन वाला नहीं कंपोनेंट है. तो समटाइम इसी सेकेंडरी लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, वी डिवाइड इनटू द heterophagosomes, जो कि हमने कॉमन नेम भी लिखा है, दैट मींस कंटेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ phagocytic enzymes. ठीक है. और समटाइम्स क्या होता है, ये बहुत एक्टिव नहीं होती, ठीक है, जितना एक्टिव होना था वो हो चुकी, उसके बाद इट कन्वर्ट इनटू द रेसिडुअल बॉडीज.
एंड एज वी नो दैट, ये हम लोग क्या करें, फॉर्म्स की बात करें, बट ये जो 3 प्रोसेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेसिडुअल बॉडीज, ये इसका एक लाइफ स्पैन है। जरूरी नहीं है कि सारे ही आपके, यहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे सीसैडल बैग। समझ आ गया? तो ऑटोफेगी इज नॉट द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दैट लाइसोसोम का लाइफ स्पैन। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। हम लोग ऑटोफेगी को लास्ट में लिखेंगे और रेसिडुअल बॉडी जो रिमेनिंग आपका बच पाए। ठीक है, सो राइट डाउन। ऑटो मतलब, हाँ 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 हाँ, यही ऑटो। ये देखो बायोलॉजिकल टर्म है, किसी भी वर्ड के आगे ऑटोफेगी लिखा है या सैप्रोफेगस लिखा है। ठीक है, सैप्रोफेगी मतलब जो डेड बॉडी पे खाते हैं, सैप्रोफिटिक, हम लोग सुने सैप्रोफिटिक एंजाइम्स, है ना। बस वर्ल्ड को इसीलिए दैट व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द वर्ड। ऑटोफेगी यही होते हैं, ऑटोफेगी बैक्टीरिया एंजाइम, मतलब वो जो खुद को खा जा रहे हैं। आपकी बॉडी में हम लोग ने बात करें ऑटोफेगी लाइसोसोम, तो ऐसी सेल जो खुद को खा जा रहे हैं। ऑटोफेगी ऑर्गन्स जो खुद को खा जा रहे हैं, जैसे कि हमने सुना है कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो खुद की ही बॉडी को खाने लगते हैं अगर उनके पास वो नहीं मिलता है, तो वो खुद की बॉडी को खा रहे हैं, तो ऑटोफेगी एनिमल्स। ऑटोफेगी इज अ कॉमन टर्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनल के सेंस में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। फर्स्ट एडनोन heterophagosomes. Heterophagosomes, also known as heterophagic vacuoles or digestive vacuoles. Heterophagic vacuoles or digestive vacuoles. Which forms mainly with the fusion of primary lysosomes, which forms mainly with the fusion of primary lysosomes with other endocytic substances. Endocytic substances. It contains mainly positive phosphatase, which engulf the material and progressively digested by hydrolytic enzymes, which is one of the major function of the lysosome, Full stop. Under ideal condition, ये नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अंडर आइडियल कंडीशन द डाइजेशन लीड्स टू प्रोडक्ट्स of low molecular weight, which pass through the lysosomal membrane and further incorporated into cell which can be used again in many metabolic pathways. Second added on, इसी सेकेंडरी में लिखो रेसिडुअल बॉडीज। Heterophagus accumulates, the heterophagosomes accumulates undigested substances through which the residual body forms means they form
means they form when the digestion is incomplete. When the digestion is incomplete. They are also called telolysosomes, telolysosomes or dense bodies or dense bodies. Clear? These are also called telolysosomes and dense bodies. Residual bodies are formed if the digestion inside the food vacuole is incomplete, which generally occurs due to absence of some lysosomal enzymes. Next point, the undigested food present in the digestive vacuoles as the residues and may take the form of roll of membranes, WHORL, roll of membranes, grains, amorphous mass, amorphous कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं जिसका, कोई मतलब नॉट, मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी, amorphous forms इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट डेंस बॉडीज है, amorphous masses etc. Next point, these are large, irregular in shape, and are usually quite electron dense. Next, residual bodies pass outward and comes in contact with plasma lemma, throw their content outside of the cell, through exocytosis or ephagy, Full stop. What is it? What we are understanding that what is residual bodies? Shivam, क्या समझ रहे रेसिडुअल बॉडीज? देखो रेसिडुअल बॉडीज क्या है, जैसे कि सपोज दैट सारे ही सेल मेम्ब्रेन को कहां जाना है, सारे ही आपके अनयूज्ड, नॉट डाइजेस्टेड, डेड सारे ही सेल पर्टिकुलर पार्टिकल को कहां जाना है, लाइसोसोम्स में जाना है. दैट मींस लाइसोसोम्स शुड हैव बीन कंटेन सच काइंड ऑफ एंजाइम्स, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, अभी जैसे हमने लिखा, इट मे बी अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम. मे बी मान लो नया लाइसोसोम बना है, उसको नहीं पता कि सारे एंजाइम्स रखने हैं, उसके पास तुरंत एक आ गई, मान लो ऐसी कोई एंजाइम जिसका उसके पास एंजाइम नहीं है, अब वो डाइजेस्ट नहीं हुई, अब वो क्या हो रही है, घूम रही है. ठीक है, अब वो मेम्ब्रेन से बाउंड होगी, वेसिकल फॉर्म में घूमेंगे, ऐसे तो घूमेंगे नहीं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, दैट इज, बट हम उस रेसिडुअल बॉडीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, अ फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम. क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये बाहर नहीं जाएगी, है ना, अगर सपोज दैट मर्ज हो जाती किसी प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ, तो ये क्या बना देती, जो पार्टिकल अनडाइजेस्टेड है वो भी तो अल्टीमेटली वही बनाएंगे ना. सपोज दैट ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन तो नहीं बनाएगा, बट अल्टीमेटली इफ दे विल बी गोइंग टू मर्ज विद द प्राइमरी और द सेकेंडरी लाइसोसोम, दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट, और उसका जो पर्टिकुलर केमिकल कंपोनेंट है व्हिच विल हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स इन द लाइसोसोम.
ठीक है, सिंपल। तो जो नहीं डाइजेस्ट हो पा रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मेजर बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो लाइसोसोम के बारे में बात करें, सो मेजर बिकॉज ऑफ उस पर्टिकुलर लाइसोसोम जो उसकी सेल में है वहां पे उसके एंजाइम्स नहीं। सो इनका डिफॉल्ट मोड क्या होता है, ये बाहर जाती है, देखो लिखा है ना रेसिडुअल बॉडीज, ये बाहर जाती है और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाती है। बट अब इसको अमीबा में इसको डिफिकेशन कहते हैं, अमीबा में इसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। अमीबा इज सिंगल सेलुलर, ठीक है। व्हेन व्हाट हैपेंड इफ द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अलाउइंग, या फिर बहुत देर तक वो एक्यूमुलेट हो गई। आपके क्वेश्चंस में, आपके पेपर में ये क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय द लाइसोसोम। तो अभी समझ जाए रेसिडुअल बॉडीज का कॉन्सेप्ट। नाउ इन सम सेल्स residual bodies may remain for a long time. Residual bodies may remain for a long time and load the cells resulting in their aging as they remain for a longer time in the cytoplasm, as they remain longer time in the cytoplasm as a lipofuscin granules, as a this word is as a FUSCIN lipofuscins granules। क्यों? क्योंकि अब जिस भी मेम्ब्रेन में ये बाउंड होके बन घूम रहा है दिस अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड मेजॉरिटी, है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोफ्यूसिन। लिपिड से फ्यूज होके एक ग्रैनुल्स के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल घूम रहा है, दैट्स अ लाइपोफ्यूसिन ग्रैनुल्स, ठीक है। लाइपोफ्यूसिन ग्रैनुल्स, फुल स्टॉप। एंड कॉज, देखो एजिंग क्या बोलते हैं, क्या होता है एजिंग में, व्हाई ह्यूमन हैज अकर्ड द एजिंग। क्या होता है, जब भी इंसान धीरे धीरे ओल्ड होना होता है, ठीक है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड लो होने लगता है ना, बहुत सारी एक्टिविटी क्या होती है डाउन हो जाती है। इसीलिए जो पर्सन बहुत फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनकी स्किन पे जल्दी एजिंग नहीं दिखती है, फर्स्ट डिफेंस पर्सन है, ठीक है। तो दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन लो, जब ब्लड सर्कुलेशन लो हो रहा है दैट मीन्स whatever the molecules need to be transported or eliminate out to the body, वो blood circulation कम होने के कारण कहीं ना कहीं जाके क्या हो जा रहा है, accumulation हो जा रहा है, ठीक है। तो या फिर जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना स्किन को स्क्रब करना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रही है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड दैट पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नीडेड टू बी एलिमिनेट, either it's a CO2, either it's a undigested food particle intestinal के through or it's a urine। अगर कहीं भी वो चीज accumulate हो जाएगी then it will be the harmful, it's a kind of system, ठीक है। So that is a thing of the residual bodies right now। Next, and causing disease such as polynephritis, may occur due to absence of E-phagy। E मतलब देखो वर्ड कैसे पहचाना, ई फॉर एग्जिट, अफेगी अब्सेंस, ठीक है। ई फेगी कहीं भी अ है मतलब अब्सेंट, ए फॉर ई फेगी मतलब अगर बाहर एग्जिट नहीं हो पा रही है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ई फेगी फ्रॉम रेसिडुअल बॉडीज the accumulation of the residual bodies cause the accumulation of the residual bodies slash malfunctioning of lysosomes cause diseases such as arthritic joint, gout, gout, lung fibrosis, etc. इसी में लिखो फुल स्टॉप। Some of the genetic and congenital disease occurs
in human beings, due to deficiency of lysosomal enzymes such as Hunter syndrome, HUNTER, Niemann-Pick disease, Niemann-Pick disease, and Farber's syndrome and Farber's disease या syndrome. ठीक है, लास्ट लिखो, third one actually, the third. अभी रेसिडुअल बॉडीज कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एड ऑन ऑटोफेगी. Autophagic vacuoles. This is another form of the autophagic vacuole. बहुत short ही है इसमें, add on. It is also known as autophagosomes, autolysosomes, cytolysosomes, full stop. The lysosomes regularly engulf pits of cytosol which is degraded by mechanism called microautophagy. Full stop. During starvation, the liver cells show numerous autophagic vacuoles. Full stop. Next point. This is a mechanism by which cell degrades its own constituents such as mitochondria ER, Such autodigestion is called autophagy. This is a normal event during cell growth. क्यों सेल ग्रोथ के टाइम पे क्यों सेल डिवाइड हो रही है? तो जो प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा था वो कहां जाएगा? ऑटोफेजी में जाएगा. ठीक है. सेल ग्रोथ एंड रिपेयर and especially prevalent in differentiating and de-differentiating tissues. ब्रैकेट में लिखो. such as the example cells undergoing necrosis बोलते हैं. necrosis is a common term for the cell death. necrosis or programmed cell death. During metamorphosis or regeneration. जैसे कि ये और अब सबसे ज्यादा कहां पर होगा? टेल में टैडपोल की, है ना, वो डिग्रेड होती है. दैट इज during metamorphosis or regeneration. Bracket close.
bracket close, and also tissues under stress, and also tissues under stress. 2-3 लाइन और है, थोड़ा ज्यादा खिंच जाएगा. We'll continue the next. ठीक है. उसके बाद फंक्शन ऑफ लाइसोसोम करेंगे, and tomorrow we are going to start about मेजर आपकी सेल ऑर्गेनल कर चुके हैं. गोल्गी हो चुका, ER हो चुका, राइबोसोम्स हो चुका, लाइसोसोम आज कंप्लीट हो गया. टुमारो विल कवर द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वी स्टार्ट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जैसे फिनिश करेंगे वी विल स्टार्ट द सेल साइकिल. सेल साइकिल में हम लोग रेप्लिकेशन सब कुछ इधर ही करेंगे. सेल साइकिल इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी इसकी भी फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है. थैंक यू गाइस. Thank you, ma'am.